खास वजह? आप आ रहे थे आपके लिए खास। नहीं, बिकॉज मॉम डीआईडी मॉम के सेट पे आई है, तो हमें लगा कि शायद ये कोई वजह होगी ये स्पेशल सिर्फ आपके लिए। कि 2015 की सबसे सक्सेस फिल्म रही है पीकू, और ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर सभी की एक्टिंग को अप्रिसिएट किया गया, चाहे वो मिस्टर बच्चन हो, इरफान और आप। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए? आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई डोंट थिंक हम किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, कनेक्ट कर पाएंगे, ये सब तो ना प्यार मिलेगा। और इतना मतलब लोग बार बार जा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं देखने। आई थिंक ये जो अब जो रिएक्शन मिल रहा है, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस एक्सपेक्टेड। और सच बताऊं तो आई थिंक इट्स गॉन बियॉन्ड अस ऑल्सो। अब जो हो रहा है वो ऑडियंस की तरफ से ही हो रहा है। डीआईडी मॉम के सेट पे क्या कुछ धमाल करने वाले हैं? I hope so. And super mom, super daughter, super families, super hit. I think that's what we're here to celebrate. And मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ मुझे बहुत सारे super moms को मिलने का मौका मिलेगा। Are you going to ask me if there's going to be a part 2? Wow, see, I knew this question. I don't know. I don't think we've thought that far. I think right now we're all just being in the moment and, sort of, I don't even know what words to use. I think we're all just sort of, we made this film with so much heart and with a lot of purity, and I think that's what is coming across. It was never made with the intention of it making big money. It was never made with the intention of a sequel. What is happening to it is just completely, like I said, I don't think any of us have thought that far right now. I think we're all just really sort of trying to absorb this amazing excitement. I've met him a couple of And dance? and I've don't let out my secrets. I'm going to try and get him dance first. एक तरफ ट्रेडिशनल फिल्म होते करण जौहर जैसे यशराज जैसे, एक तरफ पुलिस जैसे लोग आते हैं इंडस्ट्री में और अनुराग कश्यप जैसे एक नया रिमार्क खड़ा कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड के लिए तो बहुत ही अच्छा है। The fact that different kinds of films are being made and they can all coexist. But most importantly, I think I credit audience को दूँ। जैसे मैंने पहले कहा, जो पीकू के साथ हो रहा है, that's completely the audience. हाँ, हम उसको लेकर तारीफ कर रहे हैं, लोग डायरेक्टर को तारीफ कर रहे हैं, but until you get that love and appreciation from the audience, what is it? So I think really जो हमारा Absolutely, not just for Ranveer, I think for the entire team. I know that it's a film that's been very, very difficult to execute. And I really wish that it caters to a family audience. I think the films are very different and it's very easy for all kinds of folks to do. Deepika recently. What we are doing is Look center man. Deepika ji second क्या? हाथ दबा. Deepika ji आप. Deepika ji आप. Deepika ma'am right. Deepika ma'am right. Deepika ji. Ma'am center. Ma'am center. Thank you. I thought we like I'm going to start eating or something. दीपिका, आज साड़ी में कोई खास वजह? आप आ रहे थे इसलिए आपके लिए खास। मॉम डीआईडी मॉम के सेट पे आई है, तो हमें लगा कि शायद ये कोई खास वजह होगी ये स्पेशल सिर्फ आपके लिए। मुझे पता था कि आप यहाँ आने वाले हो, तो सिर्फ आपके लिए। ओके। 2015 की सबसे सक्सेस फिल्म रही है पीकू, और ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर सभी एक्टिंग को अप्रिसिएट किया गया, चाहे वो मिस्टर बच्चन हो, इरफान और आप। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके? आई थिंक हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई डोंट थिंक हम किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी, कनेक्ट कर पाएंगे, ये सब तो हमको पहले से थोड़ा सा पता था।
बट इतना प्यार मिलेगा और इतना मतलब लोग बार बार जा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं देखने. आई थिंक ये जो अब जो रिएक्शन मिल रहा है, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस एक्सपेक्टेड. और सच बताऊं तो आई थिंक इट्स गॉन बियॉन्ड अस ऑल्सो. अब जो हो रहा है वो ऑडियंस की तरफ से ही हो रहा है, हमारे हाथ से भी निकल गया है. एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग बिकॉज हम इसी के लिए काम करते हैं. एंड it's almost an emotional, overwhelming experience because I remember Shujit और मैं कल ही मिले थे and we just gave each other such a tight hug because it's really like it's so overwhelming. I can't even explain that feeling. दीपिका, डैडी मॉम के सेट पे क्या कुछ धमाल करने वाली है? I hope so and super mom, super daughter, super families, super hit. I think that's what we're here to celebrate. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ मुझे बहुत सारे सुपर मॉम्स को मिलने का मौका मिलेगा. एंड सम परफॉर्मेंसेस ऑल्सो, डांस भी करेंगे मेरे लिए. हम सब साथ में भी नाचेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है. Deepika, Piku had an open ending of sorts. Given the fact that we don't know whether you and Irfan fall in love, get married, or something of that sort. Are you going to ask me if there's going to be a part 2? Part two. Wow, see, I knew this question. I don't know. I don't think we've thought that far. I think right now we're all just being in the moment and, you know, sort of, I don't even know what words to use. I think we're all just sort of trying to understand what has happened to this film because it's really, it's a phenomenon, if I may say. I don't think it's ever happened before. So I think we're also just, as a team, coming to terms with what is happening to the film. And वो तो मतलब बहुत दूर की बात है. I don't think any of us. I have no idea. I think the fact that we made this film with so much heart and with a lot of purity, and I think that's what is coming across. You know, it was never made with the intention of it making big money. It was never made with the intention of a sequel. What is happening to it is just completely, like I said, I think we're just completely overwhelmed. And I don't think we even thought that far. Deepika, You personally want Piku sequels to be made? I don't know. Yeah, I haven't really thought about it. A sequel is not always you know. I don't know. That's not really in my control. Just because you know, a sequel doesn't always necessarily do well. You know, I think it's completely in the hands of Shujit and Juhi and what they have in mind. And if they do, I'll be more than happy to be a part of it. But like I said, I don't think any of us have thought that far right now. I think we're all just really sort of trying to absorb this amazing reaction that we've not got, and not just in India. I'm shocked at what has happened to the film internationally. Deepika, एक तरफ एक और लेडी सुपर मॉम के जज है गोविंदा, तो how was the experience meeting him? I'm really excited. I've met him a couple of times socially, but I think today is the first time that I'll get to properly interact with him. And I'm not let out my secrets. I'm going to try and get him to dance for us. Deepika, एक तरफ ट्रेडिशनल फिल्म में होते हैं करण जौहर जैसे, यशराज जैसे, एक तरफ सुजीत जैसे लोग आते हैं इंडस्ट्री में और अनुराग कश्यप जैसे एक नया रिमार्क खड़ा कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में. तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए? बॉलीवुड के लिए तो बहुत ही अच्छा है. द फैक्ट दैट different kinds of films are being made and they can all coexist. But most importantly, I think मैं credit audience को दूंगी. जैसे मैंने पहले कहा, जो पीकू के साथ हो रहा है, that's completely the audience. हाँ, हम सबने मेहनत की है. You know, लोग परफॉर्मेंसेस को लेकर तारीफ कर रहे हैं, लोग डायरेक्टर को तारीफ कर रहे हैं. But until you get that love and appreciation from the audience, you know, what is it? So I think really जो हमारी फिल्म के साथ जो हो रहा है, it's really I give all the credit to the audience. Deepika, of course, absolutely wanted at the box office. Next week is Bombay Velvet. Have you seen the trailer and any good wishes for Ranveer? Absolutely. Not just for Ranveer, I think for the entire team. I know that it's a film that's been very, very difficult to execute. You know, and I really wish them all the best. And that's what I was saying earlier. I think it's possible for different kinds of films to coexist. I think that's a very different kind of film. Piku is a very different kind of film. I think it's, you know, it's more universal. You know, it
caters to a family audience. So I think the films are very different, and it's very easy for all kinds of films to coexist. Deepika,